So practical activity 8.2 monitoring pH change. इस सेक्शन में कोई भी टाइट्रेशन प्रोसीजर हो या कोई भी pH changes हो, usually those are neutralization reactions or titration practicals in which we require the monitoring of pH change. उसमें एसिड अल्कली को या एल्कली एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा होता है, ठीक है, तो हमें उसके लिए चेंजेस फाइंड आउट करने होते हैं. तो the procedure is pretty basic. We set up the apparatus with the pH electrode connected to the computer via data logger. हमारे पास एक डाटा लॉगर होता है, वो डाटा को लॉग कर रहा होता है. हमारे पास एक pH मीटर होता है जो कि उससे कनेक्टेड होता है, ठीक है. हम स्विच ऑन करेंगे मैग्नेटिक स्टिरर को, वो स्टिरिंग स्टार्ट कर ले, डिलीवर को कांस्टेंट करे, एसिड को डिलीवर करेंगे बिल्कुल स्लो कांस्टेंट रेट पे ब्यूरेट में टू द अल्कली इन द फ्लास्क. रिमेंबर, जब हम टाइट्रेशन के लिए एक्यूरेसी की बात करते हैं तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा इस चीज का ख्याल रख रहे होते हैं कि एक्यूरेसी में स्लो रेट रहे, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप हो, ताकि हमारे पास कभी भी इसमें मिस्टेक ना हो. रिमेंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या स्ट्रॉन्ग अल्कलीज के लिए हमारे पास सिंगल ड्रॉप नियर द एंड पॉइंट बहुत बड़ा फर्क ला सकता है pH चेंज में. या इवन एंड पॉइंट आ गया है, उसके बाद आपने एक ड्रॉप भी और ऐड किया है तो हमारे पास वो बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है. तो stop when the pH has reached a nearly constant low value. pH रिएक्शन मिक्सचर के लिए मॉनिटर की जा सकती है मैनुअली. आप रिकॉर्ड करते हैं pH आफ्टर फिक्स वॉल्यूम ऑफ एसिड सैंपल्स के ऐड कर रहे होते हैं फ्लास्क में. add 1 cubic centimeter sample at a time which is almost equal to 1 to 2 drops, ठीक है, until the pH starts changing rapidly. then add 0.5 cubic centimeter samples, फिर हम और छोटा कर देते हैं. This means हम burette को set करते हैं बिल्कुल slowest rate पे. Now, if you have ever performed a titration experiment with your own hands, you do understand this is the slowest and most patient kind of an experiment. You have to be really, really patient, ठीक है? और इसमें logging भी बहुत longer period of time के लिए feel होती नहीं है इतनी longer period of time के लिए, but since you are recording after every cubic centimeter, so the tables are too big. Understandable. हमारे पास इतना स्लो से एडजस्ट किया जाता है कि लिटरली हमारे पास आफ्टर 2 seconds या 1 second एक ड्रॉप फॉल कर रहा होता है. अभी एक ड्रॉप फॉल किया, इसके अगर 2 seconds या 1 second के बाद अगला ड्रॉप फॉल करेगा, only then you will be able to record it in a book or a log near you. Now this takes time. Since this takes time, the results are always accurate if you have been patient. If you're not patient, of course you're going to skip that point and you're going to miss it out. When you miss it out, you're going to make mistakes. Now, graphs recorded on the computer are drawn by hand show how pH varies with the volume of acid added. जैसे जैसे हम इसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एसिड के हिसाब से हमें pH चेंजेस पता चलते हैं. शेप्स एंड ग्राफ की कैरेक्टरिस्टिक होती हैं और डिपेंड करती हैं कि एसिड और बेस जो टाइट्रेशन में यूज किया गया वो स्ट्रॉन्ग था या वीक था. लिहाजा यहाँ पर हमारे पास 4 सिनेरियोस बनते हैं, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है. मतलब if the whole thing, or I mean the shape of the graph is completely dependent upon the strength of the acid, तो हमारे पास एक कैटेगरी हो सकती है जिसमें हमारे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग हो और बेस भी स्ट्रॉन्ग हो. दैट्स आवर फर्स्ट केस. सेकंड केस में एसिड वीक हो लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग हो. थर्ड केस में एसिड स्ट्रॉन्ग हो लेकिन बेस वीक हो. और फोर्थ केस में हमारे पास दोनों ही वीक हों. ये 4 सिनेरियोस हमारे पास डेवलप हो सकते हैं, ठीक. तो एक्चुअली ये चारों सिनेरियोस हमने कंसिडर करने हैं और हमने देखना है कि शेप ऑफ ग्राफ किस तरह से डिफरेंट हैं if we go for a different scenario. Since there are characteristics about the strength of the acid or the base, तो हमने वो study करने होते हैं. Let's start with the very first scenario, strong acids and strong bases. pH changes. On to keep everything fair, what we are going to do is that we are going to keep the concentration same as per the number of replaceable hydrogen or hydroxyl ions or the acidic hydrogen or hydroxyl ions in our acids and bases respectively.
मतलब अगर आप एक रख रहे हैं ऐसा फॉर्मूला जो कि सिंगल OH आयन देता है पर मॉलिक्यूल, दूसरी तरफ कोशिश करेंगे कि एसिड भी ऐसा रखें जो मोनोप्रोटिक या मोनोबेसिक हो, जो सिंगल हाइड्रोजन आयन देता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस तरह से सेटिंग करेंगे और फिर इसे सेम रखेंगे, तभी आप फेयर जजमेंट कर रहे होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आप लेट्स सपोज आपने NaOH रखा और आपने H2SO4 रखा, ठीक है, आपने इससे भी 0.1 मोल रख लिया, इससे भी 0.1 मोल per decimeter cube रख लिया, that's not equal. You know, if you write a balanced chemical equation for H2SO4, it would require 2 moles of NaOH and not just 1 mole. ठीक है, तो इस तरह से ये फिर unfair हो जाता है। तो remember, the comparisons are always made fair. Now this happens in the presence of bromothymol blue indicator, ठीक है। रेंज जो है वो ब्रोमोथाइमोल ब्लू की हमने पहले डिस्कस किया था कि बिल्कुल न्यूट्रल पे होती है 7 पे, तो 6 to 7.6 के दरमियान हो सकता है। इस केस में हमारे पास एक हायर पीएच से स्टार्ट होता है और अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली लोअर पीएच पर जा रहा होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट्स मैं स्ट्रेट लाइन से निकाल रहा हूँ, ये एसिड या अल्कलीज की पीएचएस शो कर रहे हैं। Now, 13 pH means कि strong acid है। 1 sorry strong base है। So 1 pH means कि ये strong acid है, ठीक है। तो एक्चुअली में जो आपका ग्राफ होता है वो कंफर्म कर रहा होता है इन बातों को, इन पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को दैट यू बिगिन विद मेकिंग योर दिस पर्टिकुलर केस और योर पर्टिकुलर सिनेरियो, ठीक है। नोटिस करें यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ एसिड ही रख रहे हैं और उस स्पेसिफिक मोलैरिटी को कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पीएच फ्लास्क कंटेंट्स की पूरी कंसिडर हो रही है, ठीक है। तो फ्लास्क में शुरू में सिर्फ बेस था, जैसे जैसे हम एसिड करते चले आए ऐड, की पीएच हमारे पास स्लोली स्लोली कम होती रही। पीएच जैसे ही ज्यादा स्पीड से कम होना शुरू हुई, एंड वी नो दिस इज गोइंग टू बी आवर एंड पॉइंट, ठीक है, तो हमने उसे लैदा कर दिया। नाउ नोटिस कि आपके पास जब इसकी पीएच फॉल करना शुरू करती है और तेजी से चेंज होती है, तो उसने एक स्ट्रेट लाइन 7 पर लगाई हुई है जो कि वो जानता है कि न्यूट्रल के लिए, और यहाँ पर वो जो लाइन आ रही है उसको उसने एक्स्ट्रापोलेट किया है और आपके लिए एंड पॉइंट निकाला है, ठीक है, कि कहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एसिड जो है वो उसे कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकता है। So there are certain things that we need to learn with this kind of graph. It does not matter वो weak acid है, weak base है, strong base है, जो भी चीज है, लेकिन कुछ चीजें हर ग्राफ में इसी तरतीब से आएंगी। अब ऑफ कोर्स क्या होगा कि अगर आपके पास बेस बेस वीक हो जाएगी तो स्टार्टअप यहाँ से नहीं होगा, स्टार्टअप यहाँ कहीं से हो रहा होगा। अगर वो 9 वाला या 10 वाला जहाँ से भी कंसिडर किया वहां से स्टार्टअप होगा। अगर आपके पास एसिड वीक होता तो इसकी स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉप करने के बाद यहाँ पर आ रही होती। वो जो भी डिपेंड करता है कि वो आपने 5 वाला लिया, 6 वाला लिया, 4 वाला लिया, इट रियली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर टेकिंग, ठीक है। सो ये ग्राफ्स उसी तरह एंड अप होते हैं और वही करेक्टरिस्टिक होते हैं जैसे हमारे पास हमारी कंसिडर्ड वैल्यूज होती हैं। ब्रोमोथाइमोल ब्लू को इसमें क्यों लिया? ब्रोमोथाइमोल ब्लू को इसलिए लिया कि ये साइंटिस्ट ने हिट एंड ट्रायल मेथड से किए होते हैं कि कौन सा सबसे बेहतरीन हो सकता है ना। वी आर ऑलरेडी डन विद दिस होल टेबल व्हिच टेल्स यू वेयर द एंड पॉइंट लाइज, ठीक है। हम जानते थे चूंकि इसकी वैल्यू 7 के आसपास आनी है, तो 7 के आसपास जिसका एंड पॉइंट आता है उसमें ब्रोमोथाइमोल सबसे अच्छी ऑप्शन थी, ठीक है। तो हमने वो ही कंसिडर किया। Now, in order to keep this whole thing easier for you, वो क्या करते हैं कि वो ब्रोमोथाइमोल के जो कलर्स होते हैं जो उन्होंने इन रेंजेस के दरमियान देने होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किए हुए हैं। So if you take a look at it, you'll have a blue colored solution, and in this very small range, you have a somewhat greenish shade for the neutral system. Greenish कह लें या slightly different है blue से, और ये आपके पास फिर उसी तरह yellow है। This tells you that if you keep on adding the acid, ठीक है, अगर आप 32 तक जाते हैं तो ये सारा पोर्शन जितना आपका है 22 से लेकर 32 के दरमियान, it stays yellow because it stays acidic in that range.
और उस रेंज में पीएच में कोई खास चेंज भी नहीं आ रहा होता। वंस आप पीएच को ले आते हैं डाउन टू दिस पॉइंट 1, ठीक है, जो कि आई गेस यहाँ पर 22 पे शो हो रहा है, तो 22 से आगे 32 पे पीएच में कोई खास चेंज नहीं आता। इसकी लॉगिंग की जा रही होती है कि हमें एग्जैक्टली पता चले कि ये लाइन कहाँ पर ये स्विच करना शुरू करेगी। रिजल्ट्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, ये तो मैंने एक पूरा ग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए इतनी लंबी चौड़ी बात कर दी है, बट द बुक स्टेज वेरी strict about talking about the results. Now you would know about these four sentences how you are supposed to interpret the results of any specific experiment if that comes as a part of your question. So it's pretty easy. You know which lines you need to write, what you're supposed to explain, because every time the points will be these 4 points almost, and these specific things would be discussed in order to interpret results. What specific things? Number one, sharp fall कहाँ पर आ रहा है? वो clearly बता रहा है कि sharp fall हमारे पास 10.5 से 3.5 की pH के दरमियान आ रहा है। इस रीजन में टाइनी एडिशंस पीएच पॉजिटिव के एक रैपिड चेंज लाएंगे पीएच का, एंड दैट्स प्रीटी क्लियर। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो आपके पास 10.5 से 3.5 के दरमियान आ रहा होता है, ठीक है। इसमें शार्प चेंजेस आ रहे हैं। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में 10.5 या 3.5 आगे पीछे भी हो सकता है आपके लिए, जरूरी नहीं है बुक जो पॉइंट्स बता रही है आप भी उसी पॉइंट से शार्प कंसिडर करना शुरू करें। हो सकता है कोई बच्चा 3.5 की बजाय 3 से इसे कंसिडर कर ले, दैट्स फाइन, इट्स ओके। उससे ये होगा कि आपके पास स्टार्टअप और एंडिंग पॉइंट्स जो आते हैं वो इस तरह से आते हैं, ये मिडिल पॉइंट स्लाइटली 0.1 या 0.2 आगे पीछे जाता है, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। तो मिड पॉइंट स्टीप स्लोप का हमारे पास 7 पर आता है, ठीक है। दिस इज द सेकंड थिंग यू नीड टू डिस्कस इज मिड पॉइंट। शार्प फॉल कहाँ से कहाँ पर है, उसके दरमियान छोटा सा डिस्टेंस भी हिस्ट्री का बहुत बड़ा चेंज लाएगा। मिड पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? मिड पॉइंट और शार्प फॉल का कॉरेस्पॉन्ड करता है जिसपे H पॉजिटिव आयंस एसिड के एग्जैक्टली रिएक्ट कर चुके होते हैं। अल्कली को जिसे हम एंड पॉइंट भी कहते हैं, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो रही होती है। सो एंड पॉइंट को डिस्क्राइब करना, ठीक है। नंबर 3। नंबर 4, क्रोमोथाइमल ब्लू इंडिकेटर ब्लू टू येलो चेंज करता है इस रेंज में, यहाँ पे स्लोप स्टीपेस्ट होती है, ठीक है। तो वो रेंज कर दी। तो द रिजल्ट्स आर ऑलवेज इंटरप्रेटेड इन दीज 4 फॉर्म्स। ये चारों पॉइंट्स हमने टोटल करने होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा जब वो बार बार इसी तरह से रिजल्ट्स इंटरप्रेट करेगा, यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग इट। मूविंग ऑन, because there is a sharp change in the pH of region 3.5 to 7.5, we can use other indicators that change colors within this region. For example, phenolphthalein भी इस region के अंदर color change कर सकता है 8.2 to 10 के दरमियान, ठीक है। phenolphthalein color change show करता है 8.2 to 10 के दरमियान, because sharp pH changes अगर होती हैं various wide ranges पे, बहुत सारे indicators होते हैं जो end point measure कर सकते हैं strong acid का strong base के लिए, ठीक है। अब चूंकि ये 6 से 7.6 के दरमियान में नहीं आता, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग अल्कली के लिए फिनोल्फथालीन कलर चेंज कुछ पहले ही शो कर देता है, ठीक है। तो दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड दैट फिनोल्फथालीन इज ओके, ठीक है, बट नॉट एज परफेक्ट एज ब्रोमोथाइमोल ब्लू वाज, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। ओके, मूविंग ऑन। Any questions before we move on to the next scenario, next case? All right. Okay. So strong acids versus weak bases. Now pH changes. Weak base is going to be this time aqueous ammonia, same concentration. Strong acid is going to be this time nitric acid. Again, same concentration. Now, this starts differently. You'd notice that starts from around 11, right? Showing weak base. And it drops down to around 1, showing strong acid. Now, you can see that the sharp slope or sharp point where we had the fall is different this time. I'm going to scroll a little so that we can see the whole graph as well as the points. Now, the sharp fall is in the graph line between 7.5 and 3.5, that the midpoint of the steep slope is about pH 5. Okay. Now, there is no sharp change in pH over region 3.5 to 7.5. We can use methyl red as an indicator for this titration.
This is because methyl red changes color between pH 4.2 to 6.3 and 5 actually falls right in this range. आपने मिड पॉइंट को देखना है, क्या मिड पॉइंट उसके दरमियान आ रहा है, वो बिल्कुल आ रहा होता है। ये कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती है रीजन ऑफ शार्पेस्ट पीएच चेंज की। Phenolphthalein is not going to be a suitable indicator. Phenolphthalein एक इंतहाई different range पे है. Understand the point that this is mostly acidic. इसमें alkaline region सिर्फ 7 से 0.5 के ऊपर है, बाकी सारा acidic region में होता है। अब phenolphthalein अपना total change show कर रहा होता है एक alkaline region के अंदर, which is 8.2 to 10. तो वो तो इसके अंदर कोई कलर चेंज शो ही नहीं कर पाएगा, बहुत पहले कलर चेंज आ जाएगा और वो वैसे का वैसा रहेगा, which is not going to be good for us. So in O levels, we might not go with the proper choice of indicator, but at advanced level, since we're able to understand different cases, we should be able to come up with proper indicator for the proper case. Now, we ask students to keep this stuff in mind कि छोटी छोटी बातें अगर वो याद रख लेंगे तो उनके लिए बहुत आसान है. For example, this is the scenario for weak base strong acid. The midpoint is about pH 5. ये points automatically वहां पर पता चल जाते हैं, नहीं भी पता चलेंगे थोड़ा बहुत आगे पीछे होंगे, लेकिन midpoint almost वहीं का वहीं रहता है. Remember the stuff that methyl red can be a good indicator for this kind of titration, and phenolphthalein will not be a good one. If possible, do remember, try and remember the reasons. Now, phenolphthalein color change karega only gradually as more and more acid is added, instead of changing suddenly or the addition of single drop at the end point. इसकी वजह से phenolphthalein की accuracy बिल्कुल अच्छी नहीं होगी. Moving on, weak acids with strong bases. This is the opposite case of what we just studied. This time sodium hydroxide as the strong base and benzoic acid as the weak acid. Now, benzoic acid, when we say it is made up of benzene, so this is C6H5, C double OH, benzoic acid, right? So, moving on, since the acid was strong, acid was weak, you are going to notice that this is approximately over here. And if I talk about the midpoint over here, approximately over here, this gives you the idea, right? Now, this is a weak acid, and in this specific case, it was strong alkali, strong base, so 13, and these points. All of these points do not fall in the category of a strong acid. Whichever one you consider, ये सिर्फ idea के लिए, ठीक है? 3 points वहाँ पे लगाना जरूरी नहीं है. Okay, the shortfall in the graph line between 11 and 7.5, midpoint is about 9. Since there is a sharp change in the pH over these points, we can use phenolphthalein as an indicator for this titration. Phenolphthalein already we know changes color in between 8.2 and 10. तो यहाँ पर वो sharpest pH change पर भी बहुत अच्छा color change देगा, फौरन देगा, won't even require more volume. So it is going to be very accurate. Methyl orange would not be a suitable indicator, वो क्योंकि वो acidic ranges में change करता है, वो इस pH range पर correspond ही नहीं कर रहा होगा. In order to understand what we are saying, we need to get back to the table. Take a look. Methyl orange is totally in an acidic range, this range. So how can it be useful for anything that is considered above 8 or in between 7 and 10, right? So even this is not a good option. This is not a good option. This is not a good option. Even this one, right? So these are not good options. You can notice that all of them aren't. Yeah. So let's move on. बेशक सब ऑप्शंस याद रखना रखें, लेकिन एक से दो ऑप्शंस याद रखना बहुत अच्छी बात है. All right, we are done with this one. Let's move on to weak acids with weak bases. pH changes with weak acid. This time aqueous ammonia is going to be our weak base, and benzoic acid is going to be our weak acid. Notice that this acts differently. Now, you might be astonished कि क्या कर रहे हैं अगर एक weak base की बात हो रही थी तो why are we not starting with
11 or 10? Why are we starting with something over a little over 12? Yeah, that can be the point, but since उन्होंने ये वाली example consider कर दिया, let's go with this, ठीक है? तो क्रोमाथाइमोल ब्लू रेंज 6, 7.6 उसने शो किया हुआ है, ठीक है? इस केस में हमारे पास कोई ऐसा शार्प फॉल आ ही नहीं रहा ग्राफ लाइन पे, जिससे हमें आइडिया हो सके कहाँ पर आएगा। No acid-based indicator is suitable to determine the endpoint of the reaction. ब्रोमोथाइमोल ब्लू की अगर हम एग्जांपल ले तो वो कलर चेंज करना शुरू करता है 19.5 पर और वो 20.5 तक कलर चेंज करता चला जाता है, ठीक है? और वो कलर चेंज फाइनली वहां पर जाकर फिनिश होता है। दिस इज एन एंटायर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक? इस पे काफी डिफरेंस आ सकता है और कुछ ड्रॉप इसके दरमियान फॉल भी कर सकते हैं जो इजीली काउंटेबल होगा। इस तरह gradual change or addition of an acid is not good enough when you need to be able to read the endpoint और endpoint 0.05 cubic centimeter की बजाय हम 1 cubic centimeter पे find कर रहे हैं, which is 20 times more inaccurate for what we were doing in the past. 19.5 से 20.5 में भी आपको just 1 cubic centimeter का difference लगे, लेकिन remember it's 20 times more inaccurate because we were talking about 0.05 cubic centimeter changes. Now, how were we able to come up with this? ये जितना इसका sharp fall है, ऊपर का थोड़ा सा portion छोड़ के, नीचे से जरा सा छोड़ के, उन्होंने उसको fall करवाया, उसका और उसका exact center उन्होंने neutralization के तौर पे consider किया. This point is important and helpful for paper 3. Though we can pick up this kind of question in paper 2, there are rare questions in paper 2 as well, but this is more useful for paper 3. नोटिस करेंगे आपके इनके क्वेश्चंस पेपर 2 में या पेपर 1 में इन चारों सिनेरियोज के निस्बतन कम है, ठीक है? पेपर 3 के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिडर भी वहीं पर हुआ, ठीक? स्केच ग्राफ क्वेश्चन नंबर 22 के लिए उसने बताया हुआ है किस तरह से पीएच चेंज होगी। ऑफ कोर्स इसमें वॉल्यूम जो ऐड किया हुआ है वो अल्कली का ऐड किया होगा इन द एसिड। ये ग्राफ नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ जा रहा है एंड आई होप इस तरह से आपको बहुत अच्छा अंदाजा देता है कि ग्राफ अगर हम ऊपर से स्टार्ट करके नीचे की तरफ लाएं, इसका मतलब है कि हमारे पास फ्लास्क में अल्कली है और ब्यूरेट में एसिड है और हम एसिड ऐड करते चले आ रहे हैं, तो वो एक हायर टू लोअर पीएच मूव कर रहा है। जरूरी नहीं है हर दफा ऐसा किया जाए, यू कैन गो फॉर द ऑपोजिट। और ये स्केच ग्राफ बुक में आपको ये क्लैरिफाई कर रहा है कि यू मे बी एबल टू पुट द एसिड इन द फ्लास्क and take the alkali in the burette and go opposite to what you have been doing previously. ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर की हुई है and there the entire chapter finishes.